Hi, a bit much? Well, some people think I'm showing my character. Let's find out who these people are. Hello and welcome to another episode of Where's the Logic? I am Anukriti Ganesh and this show is all about news that made sense last week and news that did not. Get it? हफ्ते की शुरुआत हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी से जो अभी देश की सबसे बड़ी समस्या है, ripped jeans. The newly sworn Chief Minister of Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, made some controversial comments regarding ripped jeans. लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे. He said कि फटे जीन्स पहन के औरतें बच्चों के लिए कैसे एग्जाम्पल सेट कर रही हैं. उन्होंने एक इंसिडेंट भी नरेट किया. He said that he was shocked to see a mother wearing ripped jeans and boots while she was on a flight with her children. He also said कि she runs an NGO, goes out in society, she has 2 children and wondered what values she would give them. What kind of message she is giving to society? I'll tell you. It gives a message that your kids can wear whatever they want. They have the freedom to choose, freedom to express themselves through their clothes. And of course, and most importantly, it also shows that their moms are pretty cool, bro. And नीज से किसको प्रॉब्लम होती है यार? स्कूल टीचर्स के अलावा सबने घुटने दिखाए इस देश में. ये देखो, पीएम का, बापू का, आरएसएस का, सबका बदला लेगा तेरा रावत. रावत के कमेंट के बाद ट्विटर पे हुआ घमासान महाभारत. Women started posting their pictures in ripped jeans. Hundreds of women, influencers, actors, politicians, including Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, joined the conversation slamming BJP leader. Hashtag ripped jeans dominated Twitter trends through Wednesday, Thursday and continued till Friday. Women said that ripped jeans are better than ripped mindset. अब इतना होने के बाद सीएम रावत had to say something, लेकिन वो अकेले नहीं बोले, उनकी बीवी भी साथ में आई थी. Tirath Singh Rawat's wife said that Rawat meant to say that women's participation is unprecedented in building the society and the country. It is the responsibility of the women of the country to save our cultural heritage, save our identity, save our costumes. सारी responsibilities लड़कियों की है. ऑलवेज ये स्टेटमेंट देना चाहिए था रावत जी को, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी बीवी ने ली. फटे कपड़े और फटी सोच दोनों औरतों के सिले की जिम्मेदारी है क्या? इतना होने के बावजूद रावत अपनी स्टेटमेंट से डटे रहे. ही अपोलोजाइज बट सेड कि उन्हें जीन्स से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें फटे जीन्स से एतराज है. भाई, जीन्स फटे हो सिले हो क्या फर्क पड़ता है? द लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स उत्तराखंड इज फेसिंग राइट नाउ, जीन्स डजंट इवन क्रैक टॉप 20. After this, Rawat has made this statement. जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था. अब कुछ बोलो तो हम एंटी नेशनल हो जाएंगे. So, let's move on to our next story. This country is seeing a lot of protest. Last week, bankers की strike थी privatization के against. The United Forum of Bank Unions, an umbrella body of 9 unions, called for a 2-day strike from March 15th to protest against the proposed privatization of 2 state-owned lenders. In the Union Budget, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced the privatization of 2 public sector banks as part of its disinvestment plan. The government has already privatized IDBI Bank by selling its majority stake in the lender to LIC in 2019 and merged 14 public sector banks in the last 4 years. इसको लेकर hashtag बैंक बचाओ देश बचाओ ट्विटर पे ट्रेंडिंग था. बैंकर्स ही नहीं बल्कि लगभग हर सेक्टर में प्रोटेस्ट चल रहा है. टीचर्स को ही ले लो, दिल्ली में टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही सैलरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं. टीचर्स को उन्हें काम को लेके 6 महीने से पैसे नहीं मिले और स्टूडेंट्स को काम ही नहीं मिल रहा है कि उन्हें सैलरी मिले. फार्मर्स, 300 फार्मर्स की इस देश में अभी तक डेथ हो चुकी है, लेकिन हु इज बॉदर्ड? रिप्ड जीन्स से नजर हटे तो हमारी नजर जरूरी मुद्दे पे जाएगी ना. Environmentalist activists are also protesting. People are protesting in Uttarakhand because the government has planned to construct roads through the forest and villages are not happy about it. Hence, they have revived the Chipko movement. So the bottom line here is कि खुश कौन है? अच्छे दिन किसके आए? अरे ना, ये देखने के बाद I don't think even he is happy.
अच्छे दिन तो लोगों के आए हैं, कोविड-19 कहीं गया नहीं है, पर लोगों का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। तो ये है कोविड, ये है कोविड के बढ़ते केसेस और इनकी हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। So COVID cases are rising again in India. Many cities are under lockdown yet again. On March 17, India logged 28,903 new coronavirus infections and 188 new fatalities. Despite the vaccination drive against coronavirus, India is witnessing an upward trajectory in COVID-19 cases. पर आप कहोगे कि वैक्सीन तो है ही, वैक्सीन तो है पर इसे कोई ले नहीं रहा। 4 states and union territory of Jammu Kashmir have reported wastage above the national mark of 6.5%. Telangana, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka and Jammu Kashmir including. Other cities might also go into lockdown if COVID cases keep rising. इसलिए भारतीय जनता please don't party. Moving on to our next story, एक recent report के मुताबिक COVID lockdown and pandemic pushed 3.2 crore middle class Indians to poverty. Now I know there is no way I can crack any joke on poverty and not offend someone, but you know what? I can still do it because who might get offended can't watch me right now. Courtesy coronavirus. Citing the World Bank forecast of economic growth, the Pew Research Center said that India is estimated to have seen a greater decrease in the middle class and a much sharper rise in poverty than China in the COVID-19 downturn. The report added that nearly 5.7 crore people had joined the middle income group in India between 2011 and 2019. Man, this year is getting darker and darker every day. Well, our last story is all about hope and justice. हमने बहुत सारे न्यूज़ सुने हैं जिसमें हाई कोर्ट ने रेप अक्यूज से पूछा कि विक्टिम से शादी कर लो या तुमने क्या कपड़े पहने थे एटसेट्रा। इस पे हमारा खून तो खौला ही था, पर इस बार सुप्रीम कोर्ट को आया गुस्सा। पिछले साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम से कहा कि अपने अक्यूज को राखी बांध दो। यस, राखी बांध दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट वाज लाइक यू गाइज नीड रूल्स नाउ। ऐसे दाल नहीं गल रही तुम्हारी। The Supreme Court said कि court will not ask the victim ने क्या पहना था assault होने वक्त, और court shall not mediate any sort of compromise between the two parties. Courts need to display sensitivity at all times and several other directions were given by the Supreme Court. चलो directions तो मिल गए, but is not following directions the only problem in these cases? Let me know in the comment section below. You can also suggest stories that didn't make sense to you and we will try and make sense out of it in our next week's episode. Till then, stay logical.